हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि मैं कल शाम को और आज सुबह मैंने आपके लिए दो वीडियोस डाले और दोनों में मैंने आपको एक में कुछ अपने स्टॉक्स दिए थे और एक में मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात की थी। आज हम ये देखेंगे कि कितना हाउ वाज माय जजमेंट ऑफ द प्राइस, व्हाट वाज माय जजमेंट ऑफ द प्रिडिक्शन अबाउट द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द वेरियस स्टॉक्स दैट आई हैव गिवन। तो कल मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे, उनमें से कुछ स्टॉक्स, उनमें से सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। वी डिड टॉक अबाउट फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन और बोला था मैंने कि 105 के नीचे एटलीस्ट 100 का टारगेट आएगा। ऑलरेडी ये अभी खड़ा हुआ है 104 पे, लो लगाया था कुछ 103 का, राइट? दैट वाज द फर्स्ट स्टॉक। Then the looping, like it wasn't the first stock, one of the stock I can say. Looping, how will you look at the looping? Beautiful breakout from 616 level till about 597. In a 600 rupees stock, 16, 17, 18 points are quite a lot, right? Then I have told you about McDowell, right? McDowell, or what do you call, United Spirits, right? Have a look at United Spirits or McDowell's. What beautifully it has broken the level and made a low of 769. अगर आप मेरा कल का वीडियो सुनेंगे, मैंने बोला था एक सपोर्ट लेवल आप देखेंगे पास्ट में एग्जिस्ट करता है अब at about 766, right? So it almost reached there and little bounce, but let's see. My research is always for few days. ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए होती है। देखते हैं अभी कितना और नीचे जाता है मार्केट, राइट? फिर मैंने बात की थी जीनस पावर की, जो मैंने आपको बाय के लिए दिया था और उसने अपना लेवल ब्रेक नहीं किया है, राइट? सो आई हैव गिवन अ बाय अबव 96. It has not given, rather it is going in the downward direction. So our buy has not been triggered, right? But a lot of you work under FOMO, fear of missing out. आप लोगों को लगता है कुछ मिस हो जाएगा, अगर ये रिसर्च दी है मैम ने तो यही पहले ही खरीद लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, राइट? सेलर्स आर वेरी एक्टिव। अगर ये लेवल ब्रेक होगा, if this level is taken out, then only you can expect a buying opportunity, right? So patiently wait and then take an entry. Okay, then the next stock that I had given was Oberoi Reality, right? Oberoi Reality. Here is Oberoi Reality. Oberoi Reality gave a break till about, starting from 787, it went till about 772, which was a good drop, right? And then it took a bit of reversal because it's a very strong support zone as well, right? So anyway, this was this, and then we did talk about Nifty and Bank Nifty. Have a look at Bank Nifty, जो हमने कल डिस्कस किया था कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, तो 34,850 is a very very strong resistance zone for Bank Nifty. एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बैंक निफ्टी ने इसी जगह से रेजिस्टेंस लिया है। और अब अगर आज मैं आप लोगों को एक ट्रेड देती हूँ, आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड दूंगी। 34,500 का कॉल ऑप्शन आप लोग सेल कर सकते हो। कौन सी एक्सपायरी का? 16th एक्सपायरी का, राइट? 16th जून की एक्सपायरी का आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। लेट मी जस्ट एड इट अप सो दैट यू हैव ऑल द डिटेल। बैंक निफ्टी 34,500, 16th जून का कॉल ऑप्शन हम सेल करेंगे, राइट? दिस इज 16th जून। राइट नाउ इट्स अबाउट एट 846 रुपीज, राइट, पर लॉट। एक बार ये भी देख लेते हैं कि सेल करने में हमें कितना पैसा चाहिए। 1,35,000 चाहिए और एक लॉट आपको सेल करोगे तो आपको रफली अबाउट 20,000 मिलेंगे इफ इट एक्सपायर्स वर्थलेस, राइट? आप इसमें मार्जिन को रिड्यूस भी कर सकते हो by buying a far away call option, so your margins will reduce drastically. So this is a trade that I'm giving you right now based on an extreme amount of research that I have done. But looking at the Bank Nifty, it looks to be expiring somewhere around 33,000, 34,000 or 33,000 by 16th of June, right? यहीं पे घूमती रहेगी बैंक निफ्टी, अभी इसमें कोई डिसाइसिव मूव नहीं आएगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक ट्रिगर्स ढूंढ रहे हैं, राइट? दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ ट्रिगर्स। सो जब तक ट्रिगर नहीं आता है तब तक मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। Now see here, Nifty has also given a little gap down opening and then it tried to go up but couldn't manage and then went down and then
a bit of reversal took place, right? 16,030, 16,040 से reversal हुआ है, right? So it is exactly the way I predicted yesterday, you know, for you people. और morning में जो आपको video मिला था, where I've told कि 16,000 is a very very strong support. Now परसों expiry है, what can be expected, right? मैं आपको एक बहुत simple सा फंडा देती हूँ कि आप देखो अभी जाके, जाके आप यहाँ देखिए 16,000 पे ह्यूज पुट राइटिंग है, राइट? 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। अगर आपको कल ये कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ कम होते हुए दिखाई देते हैं, अगर 1,76,000 की जगह 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट रह जाते हैं या 76,000 कॉन्ट्रैक्ट रह जाते हैं या 80,000 90,000 कॉन्ट्रैक्ट रह जाते हैं, मतलब यहाँ पे अनवाइंडिंग हो जाती है, तो निफ्टी विल फर्दर फॉल, एक कैटास्ट्रोफिक फॉल आएगा निफ्टी में। बट अगर ये इंक्रीज होता है तो निफ्टी 16,000 के आसपास ही एक्सपायर होगी। आप नंबर्स याद कर लो, 1,76,858, right? This is the number that you need to remember, right? These are the high number of put options that have been written for Nifty, right? So the trade that I have given you, I have typed it over here. You have to do the option selling. I'm not suggesting option buying, and do it systematically. In case price goes in Bank Nifty till this point, let's say till 34,766, you can add some more quantity, and you can add up some more quantity somewhere around here at this place. यहाँ पे 34,600 पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये 34,000 को 34,700 को ब्रेक कर रही है बैंक निफ्टी somehow, then you will have to hedge your positions, right? So अगर देखा जाए तो at this point of time 846 or about till about 1,000 you can really hold your option selling trade, and I am expecting it to expire worthless because back nifty will remain range bound and nothing much can be expected, but nevertheless anything is possible in the market, right? तो ये मैंने आपको एक बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेक्टर्स की एनालिसिस करेंगे, राइट? और सेक्टर्स को देख के पता लगाएंगे कि मार्केट कैसा लगा है। तो आप देखो ये मिड कैप है, निफ्टी मीडिया है, थोड़ा सा पल्सेट कर रहा था ऊपर जाने के लिए, बट आज एक मैसिव रेजिस्टेंस लगा, राइट? इसी तरह आईटी इज अगेन जैसे एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी थी, फिर दो स्मॉल इनसाइड कैंडल बनी, और आज अगेन फिर से एक बड़ी कैंडल। So this is again a negative sign, right? It doesn't look very good. IT doesn't look good. Pharma looks extremely, negative at this point of time. How am I saying that? Just see, if I draw a parallel channel, it has broken this parallel channel, right? Pharma has broken this parallel channel quite massively. Then have a look at FMCG. It is a very strong resistance zone, right? Very very strong resistance zone, and it cannot sustain, FMCG sector cannot sustain itself, and given a beautiful drop in the downward direction. Small cap again under stress, reality again under stress. Metal, as I told you, metal has broken its long time support, right? आज ब्रेक करने की कोशिश की और वहीं पे आके ऑलमोस्ट खड़ी हो गई है बैंक निफ्टी। अगर अपने लो को, नहीं नॉट बैंक निफ्टी बट निफ्टी मेटल, अगर अपने लो को ब्रेक करता है, देन अगेन एज आई टोल्ड यू 1600 सपोर्ट विल आल्सो ब्रेक इन निफ्टी। एज आई टोल्ड यू इन माय यस्टरडे मॉर्निंग्स वीडियो, आज जो मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि कौन से सेक्टर निफ्टी को बहुत इफेक्ट करते हैं, उनमें से जो बिगेस्ट सेक्टर मुझे लगता है वो है मेटल सेक्टर। तो मेटल अगर कल ब्रेक कर देता है अपने लॉन्ग टाइम सपोर्ट को, एक देखो आपको नोटिस करना है कि कितनी जगह निफ्टी को सपोर्ट लगा है। यहाँ पे मेटल निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लगा है, मेटल निफ्टी को यहाँ सपोर्ट लगा है, यहाँ लगा है, और यहाँ पे अब सपोर्ट पे खड़ी हुई है। In case this support is broken, you can definitely expect a good drop, and even all metal stocks will fall, and even Nifty will fall, right? So that is how market looks at this point of time. Pretty negative, not very very good. So trade carefully. If at all you want to trade in some sell trade rather than buy trade. Let's have a look at the sectors which were positive, right? So auto was slightly positive, right? But auto has a huge amount of resistance,
at this place, right? तो बहुत ज्यादा move मुझे expected नहीं है until this barrier of 11,300 is crossed in Nifty Auto. उसके बाद Nifty Private Bank slightly positive but not enough to sustain the movement. Then PSU Bank negative, Service negative, Mid Cap negative, MNC negative. So pretty much negative market. And as I told you, Metal Nifty is on a very long support. In case that support is broken, I'm expecting huge drop in Nifty at least, right? And Nifty और Bank Nifty के price action को भी थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं. This is how Bank Nifty opened today. यहाँ से यहाँ तक का एक थोड़ा सा स्लाइट पॉजिटिव मूव आया, बट every time Bank Nifty tried to go up, there was pressure for it to pressure which pulled it down, right? Went up, came down, went up, came down, went up, came down, went up, came down, again horizontal, came down, went up and came down, right? So there is, if you just see here, the price definitely went up और यहाँ पे almost double top लगा है और उसके बाद price नीचे आ गया, right? Let's have a look at Nifty as well. What happened in Nifty? Here is Nifty. So Nifty also had a similar pattern, not exactly similar, but Nifty opened almost like the previous day's closing only, not much high or much low. And then after that, tried to go up, then came down, then went up, then came down, then went up, came down. Look at this double top, and then here you had a breakout in the Nifty's price and it fell almost like 100 points, right? After this double top, Nifty fell almost like 100 points, right? So the stance definitely doesn't look good, right? And it may continue for this at least another 15-20 days. You may expect it to further go down. And 16,000 पे अगर आपको unwinding दिखती है, as I'm telling again and again, अगर आपको unwinding दिखती है, यहाँ पे अगर थोड़ी कम put riding होती है, then you can definitely expect some kind of drop, right? तो ये तो था 26th May का, right? This was 26th May, right? But in case you look into 2nd June, what is happening? Where is the support? 16,000 is again a very strong support zone. Let's have a look at what's happening on the 9th June. So again, there is a huge support at 16,000. See here, this is a support being built at 16,000. On 16th June, what is happening? Again, the support is at 16,000. So 16,000 becomes your extremely strong level, right? So watch out for 16,000, and there is a possibility that if it goes to 16,000, there may be a little bounce of at least 100-200 point that can be expected. तो ये मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी. एज ऑफ नाउ मैंने आपको एक इसमें ट्रेड दिया है. कौन सा ट्रेड दिया आपको? बैंक निफ्टी 34,500 का हम कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, बट कौन सी एक्सपायरी का सेल करेंगे? 16th जून की एक्सपायरी का सेल करेंगे, राइट? 34,500 कॉल ऑप्शन we will sell for 16th of June, right? I'm not giving a buy trade. Don't tell me that you bought an option because मैंने sell का trade दिया था. वो choice आप खुद बनाएंगे और अगर आपको उसमें लॉस होता है then I'm not responsible. मैं केवल आपको एक ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड दे रही हूँ, वो भी बैंक निफ्टी में दे रही हूँ. इट रिक्वायर्स अबाउट 1,35,000 रुपीज, और अगर आप इसको हेज करेंगे किसी फार ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से तो probably it'll come out to be 50,000 rupees, right? And what you're gaining is definitely quite a lot of money. And this is the trade that I'm giving, and keep learning and keep working, and please do not work under FOMO, which is fear of missing out. There's nothing which is missing out. Stock market is all about being very methodical into your execution of the trades. अपनी क्वांटिटी को थोड़ा what do you say मॉडरेट करिए. क्वांटिटी कंट्रोल होनी चाहिए आपकी. अगर पोजीशन साइजिंग अगर मिसमैच होगा तो you may not get very good trades. So with this, I'm signing off. Hope each video is making you understand something new about the market. If it is so please give a thumbs up and like, share and subscribe with your friends, and remain connected. We do a lot of live trading every day rather. Please visit my Telegram channel. Let me show you. So here is you go to the description box of my YouTube channel of any YouTube video, and you will be able to find the Telegram channel. Join through that, and you will find the link of our daily live trading. You will be able to definitely make some money along with us. A lot of people are making 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, whatever their capacity is. They're making money every single day. So join me there. See you. Take care. Bye bye.